और ये इंजीनियर हैं और जॉबलेस हैं, लेकिन ये जितने भी इंजीनियर जिन्हें मैं आज तक जानता हूँ सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मुनीब पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट पाकिस्तान से ले रहा हूँ मैं। अभी हम कहाँ बैठे हैं? हम लोग F10 मरकज़ में बैठे हैं। हमारे साथ कौन है? शायान अहमद। और शायान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। जैसे जैसे आप पॉडकास्ट सुनेंगे आपको आइडिया होता रहेगा। शायान ने किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से की थी? 2015 में की थी और नेस्ट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 2015 हमारे बैच की है मतलब। और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है पर नहीं की। और ये इंजीनियर हैं और जॉबलेस हैं, लेकिन ये जितने भी इंजीनियर जिन्हें मैं आज तक जानता हूँ सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के डॉलर छाप रहे हैं। ठीक है, इन बॉय का ये गेम ऑन है। तो सर पहले तो इंट्रोडक्शन करा दें, किस तरह आप एज इंजीनियर जब आपने 4 साल पढ़ा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ तो कुछ नहीं सिखा सके आपको। विद इन द 4 साल वो वाला आप किस तरह आपका माइंड सेट चेंज हुआ कि बिज़नेस वाली साइड पे जाना है, जबकि आप इंजीनियरिंग स्टडीज़ कर रहे थे उस टाइम पे? तीन ये कि 2015 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी और 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडीज़ मेरी एक इंटर्नशिप हुई थी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड में। और उस वक्त ऑयल एंड गैस का बड़ा शशका होता था कि बंदे ने जी उधर जाना है और पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जी, बड़ा स्कोप है, एक बड़ा वर्ड यूज़ होता है। तो मैंने उधर 1 महीने इंटर्नशिप की और उधर रियलाइज़ हुआ कि मतलब बैंक अकाउंट्स तो फुल होंगे और दे पे रियली वेल इफ़ यू वर्क ऑफ, लेकिन you don't have a life, मतलब वो जो freedom वाला aspect था that was missing. So but then I started exploring, I started working with other people and I realized कि freedom is important to me. मतलब I should be able to do whatever I want, whenever I want, with whomever I want, right? So इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए I found कि if I go for business and especially internet-based businesses, then it could be a really good way forward for me because it allows you to work anywhere. You just need to have a computer and you just need to have an internet connection. And उसमें कुछ points ये हैं कि you have freedom, number 1. Number 2, the growth is really exceptional and you're basically on your own. The amount of effort you put in, you get the reward for that. अच्छा, तो यार ये चीज़ के जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, मेरा माइंड सेट था अच्छे ग्रेड ले लो, ठीक है। नॉर्मली यही होते हैं, हम इंजीनियर ऐसे पढ़ रहे होते हैं, हमें होते हैं अच्छे ग्रेड नहीं आ रहे तो फ्यूचर तबाह है, ठीक है। उस टाइम पे मुझे याद है मैं से मिलता रहता था, बीच में थोड़ी थोड़ी हमारी मुलाकात होती थी कि बेटा बता रहा था मेरे ग्रेड ये हैं, मतलब 2 भी नहीं क्लियर हो रहा होता था। मैं कहता क्या अपना फ्यूचर तबाह कर रहा है। हम नहीं, लाइक नॉर्मली यही परसेप्शन थी, हर किसी की यही परसेप्शन थी कि यार ये बेचारा क्या ना अपनी डिग्री ज़ाया कर रहा है, माँ बाप के पैसे लगा रहा है, वो ज़ाया हो रहे हैं कि इतनी अच्छी जगह पढ़ रहे हो लेकिन नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उन सबको तुमने कॉप अप कैसे किया कि हर किसी की के लोग जो होते हैं ना, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तुम्हें ये पॉइंट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा कि यार सब एक डायरेक्शन में निकले हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। Exactly. उस पर किस तरह तुमने मैनेज कैसे किया था अपने थॉट? अच्छा हाँ, यू राइट अबाउट द फैक्ट कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं तो एक जनरल मेंटालिटी होती है विच इज़ माई मेंटालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम गेटिंग अ 3.0 GPA and I will go to a shiny multinational and everyone would say okay, this guy fits into a very societal socially defined perception of what a good guy or good engineer should look like, right? But everyone else was doing it and it's a very decent career if you get a job and if you work and you support your family or support your goals, it's fine. But I realized that my goals and my values were a little bit different from other people, right? Which meant that I needed to take steps which were different from them, right? So while they were focusing on studies or getting good grades, which is completely fine, I was focusing on working with different management companies, businesses all around the world. By the time I graduated, I had worked with 80 different businesses from all over the world, right? I didn't have good grades. I mean, I have a 2.75 GPA, but by the time I graduated, I had a $20,000 a month business. उस टाइम पे आप ग्रेजुएट हुए थे, तो $20,000 की ऑलरेडी इनके पास कंपनी लाइक बिजनेस आपका एस्टैब्लिश हो चुका था। Yeah, in June 2015 I was making $20,000 a month, right? So I had this kind of experience and these kind of achievements, but the other people, they had different sort of achievements which are also good, like getting a 3 GPA and then getting a job at a multinational. जो कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ते हैं अच्छे ग्रेड लेते हैं उन्हें डिग्रेड करने का कोई मकसद नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, आप पढ़ो।
लेकिन लाइक जिस तरह इनका था कि इन्होंने अपने लिए एक स्ट्रेटजी बिल्डअप की, उस लिहाज से चले और इनके माइंडसेट सेट था कि मैंने ये करना है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय जिस ग्रेड में जो आपको ऑब्वियसली आपने सोच लिया था कि यार वर्कआउट नहीं करेगा मेरे लिए, तो आप एक अपनी फील्ड में निकल गए थे और उसमें जब आप एक चीज़ आपने बना ली कि यार ये करना है, तो उसमें आपने जाके आगे ग्रो किया और अब माशाल्लाह अब जो सीन है वो हम पूछेंगे कि कहाँ पे पहुँचा हुआ है बॉय, ठीक है. After graduation, I did not really apply for a job, so I was basically banging my head against different walls and trying to figure out what I really want to do, because the kind of business that I was running, it was a services-based business, right? I had a team of around 20-30 different people working for me, but I still had to invest a particular amount of time in order to make money, which wasn't really efficient. I'm a very lazy person. I want to make money or produce results with minimal effort, right? So then I came across different business models, and I realized that a lot of people were starting their own internet companies, growing them and selling them. So the exits were really impressive. For example, Wirecutter recently sold for $30 million. So I mean, that was impressive for me. So in start of 2017, I started muddling around with different business models, and currently I have around 6 different online businesses, and I'm starting 4 more. Right, and there is a team of around 30 to 35 people working. So the main goal is to create them into profitable online assets that I could either hold or maybe sell them to grow my portfolio even further. मतलब अगर मैंने कोई कंपनी खोलनी हो, मैं इन्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ कि यार आप ये कर लो और मैं कंपनी चला दूँ, तो आप उसको एज ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो या ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हो या आप कंपनी इस्टेब्लिश किस तरह करते हो? लाइक मेन गोल जो अभी तक मुझे समझ आया, आप यही बिजनेस रन कर रहे हो, आप लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हो, फिर आगे उस इन्वेस्टमेंट से उनका बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो. तो Achha, so there are two main things for this. If you start your own company and if you grow it yourself, so uska obviously fayda zyada hota hai, right? And this is what I'm trying to do. Whatever money I make from my companies, I reinvest to start more companies, right? For example, the revenue or profit generated from my 6 companies right now, it's being reinvested into starting 4 more, okay? So this is the best solution for me. But then there are investors either in Silicon Valley or US, Europe. They want to start their own companies and they literally want to make money while they're sleeping. So they say, okay, Shan, you have done this business model is really amazing, and you're making around $10,000-$15,000 through one venture alone, right? We have the money to invest, just create something for us like that. So other than starting my own ventures, I also offer consultation and services to them so that they can have their ventures too. So the primary mode is starting, growing and selling my own companies, while the secondary mode is offering consultation and services to people who also want to do the same, of course for a price. इम्प्रेसिव. तो ये आप पकड़ते कहाँ से हैं? ये आपने इनिशियल जब स्टार्ट किया होगा ऑफ कोर्स, तो एकदम से तो आपको सारा बैठे बैठे आइडिया नहीं हो गया होगा, कहीं ना कहीं से आपने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया होगा. वो क्या पॉइंट था जहाँ से आपने ये चीज़ स्टार्ट की, और अब आप किस तरह से आगे अपने कस्टमर्स जो होते हैं वो किस तरह आपको अप्रोच करते हैं, क्या करते हो? Okay, right. So initially when I was starting out, so I was into a few communities of the same people who start, grow and sell internet ventures. So this looked at my results and they were like, okay, you've already done it, so we want to save time and we can invest. So you do the thing for us and maybe you can own a portion of the company. So start में तो इस तरीके से हुआ, but I never market myself. उसमें ऐसे ही होता है because we are a very closed community of investors and entrepreneurs. So वो word of mouth पे ही चलता है. Okay, this guy has produced amazing results, so you might want to get in touch with him. जिस तरह काफ़ी मेरे business के aspects ऐसे होते हैं in which I'm not good, right? So I just pay someone else some money और उसे कह देता हूँ कि okay, do this for me, you would own this part of the company and maybe we can partner on it. So marketing specially कोई नहीं है कि मैंने specifically ads लगाए होंगे या website बनाई होगी. I didn't do anything. It was basically through word of mouth. Like networking, I think networking ज़्यादा important हो जाती है इससे. ठीक है, परफेक्ट. तो अभी जिस तरह से माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है आपके ऑलरेडी बिजनेस में, फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं आप अपने लिए, बिजनेस के लिए? Achha, so right now the valuation of the business is in 7 figures US dollar, right? So which is a multi-million dollar range, right? So I'm trying to transition into at least 8 figures, like
that is a quick goal in next 3 years. So so basically I just want to own a portfolio of online companies, right, with multiple streams of income, right? Because in business it's really important to diversify where your money is coming from, so that if one venture takes a hit, the other ones are not really affected through it. फिलहाल तो ये goal है, but other than that I want to go into VC and venture capitalist, where I invest in companies and then take profit when they grow. लेवल चेक कर रहे हैं बॉय का, आधी बातें मेरी समझ लग रही हैं आधी थोड़ी मेरे से भी हाई लेवल की बातें कर रहे हैं, फर अंग्रेजी बोल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान ही रहे सारा दिन। ये बेसिकली इन्हें बुलाने का मकसद भी, इनसे मिलने का मकसद भी मेरा यही था कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन आप जोन सी भी फील्ड कर रहे हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो। ये मैकेनिकल कर रहे थे, इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे और डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अब एक चीज़ में जिसमें अच्छे हैं उसी में जा रहे हैं। तो मतलब ये ना करो कि यार, मैं काफ़ी बार ये कह चुका हूँ, लाइक सारे लोग आते हैं, अच्छा हमने इंजीनियरिंग कर ली है, पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बाहर निकलो, ठीक है। जो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं यूरोप में हूँ, जर्मनी होता हूँ, जिस तरह आपको पता है, काफ़ी लोग आते हैं कि यार हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो कि एक तरह से मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल साइड पे चले जाओ, इंजीनियरिंग साइड पे चले जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। लेकिन हमारी जनरेशन ऐसी है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है। जिस तरह से आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आपने जिस तरह अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, तो यंग जनरेशन मेरे ख्याल में यहाँ पे भी रहते हुए काफ़ी ज़्यादा कमा सकती है। ये शिकायत नहीं कर सकती कि अपॉर्चुनिटीज़ बंद है, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज है, आपके पास इंटरनेट है, आप कहीं भी घर बैठे बैठे क्या क्या नहीं कर सकते। कोई ऑफिस तो नहीं था आपका, घर बैठे बैठे किया जो किया। अभी भी ऑफिस नहीं है, आई जस्ट वर्क फ्रॉम माय रूम। तो घर बैठे बैठे इन्होंने एक मल्टी मिलियन कंपनी माशाल्लाह से इस्टेब्लिश कर ली है। मुझे पता है इतनी ख्वारी होती है बाहर कोई मल्टी मिलियन कंपनी इस्टेब्लिश नहीं है अभी तक। अच्छा, तो ये सीन है। तो यंग जनरेशन को किस तरह से थोड़ा मैसेज देंगे, जो इंजीनियर हैं जिनकी जॉब्स नहीं हुई, जो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन्हें आप क्या कहेंगे, आप क्या करना चाहिए? जॉबलेस इंजीनियर्स, मैं आपको भी जॉबलेस इंजीनियर कहूँगा लेकिन अ जॉबलेस इंजीनियर विद लाइक अ मल्टी मिलियनर बिजनेस माशाल्लाह, तो क्या पैगाम देंगे आप उन्हें? अच्छा, so I think the most important thing to realize is कि we are living in a very interesting time right now. अगर 20-25 साल पहले चले जाएं तो इंटरनेट नहीं था, जिसका मतलब था कि बैरियर ऑफ एंट्री वाज रियली हाई if you wanted to do something. Right now, if you want to do something, the only thing you need is a computer and an internet connection. You can learn anything you want, you can do whatever you want, and you can make money off of it, right? So I think it's just an excuse that jobs nahi hai, because you could make a lot more money working online. You could expand a lot more than any job career, right? So, and I'm not exaggerating, but if you work really hard, even in 2 years, you could literally make more money in a month than what your whole batch makes in the whole year. सुन लो मैकेनिकल वालों, ये सारे बैच की बात कर रहा है, हमें भी तड़ियाँ दिखा रहा था, मेरे बैच वालों को देखो, मुझे देखो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इसके बैच वाले इससे भी ऊपर की मजाक कर रहा हूँ। चलिए, ये हमारे साथ शान थे। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पोस्ट करें। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन के लिए जाना हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वही है। अभी मैं विज़िट करने आया हूँ, दोस्तों को पकड़ रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन जो मल्टी मिलियनर्स हैं ना उन्हें स्पेशली पकड़ रहा हूँ तो शान, छोटा सा मैसेज मेरे चैनल के हवाले से कुछ देना चाहें? अच्छा, सो मुनीब के चैनल के हवाले से ये कि जो मोस्ट जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट है, मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी और जैसा असल में बंदा है वैसे ही चैनल पे आ रहा होता, तो आई थिंक बीइंग जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोइंग टू जर्मनी, or maybe he can guide you do the same as well. So I think if you want to go to Germany or Europe, I think this is the person to contact. So maybe you might want to get in touch with him if you think it's a good idea. Thank you यार, थैंक यू। जो मुफ्त की मार्केटिंग हो जाती है मेरी बड़ा मज़ा आता है इसमें खैर, अभी हम कश्मीरी चाय ठंडी हो रही है हमारी, और पाकिस्तान का टूर में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें ना वहाँ पे नहीं मिलती और इस टाइप के दोस्त भी नहीं मिलते। तो खैर मैं इंजॉय करता हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।